नमस्कार सभी को। फिर से स्वागत है मेरा चैनल कैरियर कैरियर में। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लेट मी डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर्स। हम सेमीकंडक्टर्स में क्या डिस्कस किए थे? व्हाट इज इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर, हाउ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर जनरेटेड इन सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, उसके बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स है सेमीकंडक्टर से। वन इज पी टाइप, अनदर इज एन टाइप। तो पी टाइप कौन सा होता है? जिसमें ग्रुप थ्री एलिमेंट्स को मिला के बनता है पी टाइप। व्हेन ग्रुप थ्री इज एडेड टू ग्रुप फोर as doped, ग्रुप फोर मतलब सिलिकॉन के साथ कौन होगा? सिलिकॉन के साथ अगर ग्रुप फोर, ग्रुप थ्री मतलब उसका ट्राइवेलेंट एटम हमारा एल्युमिनियम होगा। उसके पहले एल्युमिनियम और बाद में ग्रुप फाइव होगा फास्फोरस। एल्युमिनियम सिलिकॉन के साथ जब एल्युमिनियम मिलकर डोप होता है, तब जो डोप होता है मतलब वो डोप किया जाता है, ऐड किया जाता है सिलिकॉन में एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। इट हैज थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, has three valence electrons, so three electrons in outermost shell. So जब silicon atom, silicon element is added with aluminum, then silicon का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, लेट सपोज फोटो होगा तो देखते हैं। लेट्स सपोज इसमें देखो, भाई इसमें देखोगे इधर सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ कौन है? बोरॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? सिलिकॉन में हमारा कौन सा एटम डोप होगा? इसका सिलिकॉन, शायद सिलिकॉन का हमारा, सिलिकॉन के साथ हमारा कौन सा एटम डोप हो सकता है? शायद एल्युमिनियम ही होगा सर। और ट्राइल्यूनर, तो जर्मनियम के साथ इधर बोरोन हो। The silicon here, when silicon is doped with aluminum, then there is a same radius। सिलिकॉन का हमारा एटॉमिक रेडियस 14 होता है शायद। Here silicon has two atoms, two electrons in here. When there is aluminum, there is three electrons, so तीन में शेयर होगा and there is a vacant place. Here there is a vacant place. Vacant place. Yes. So where there is vacant place, there is a hole. So that vacant place is another hole from another silicon atoms come here and there is a hole. So hole is generated during p-type elements. Hole is generated due to vacancy of electron, the less value of electrons, क्योंकि जो टेट्रावैलेंट जो ग्रुप थ्री का इलेक्ट्रॉन है उसका आउटर मोस्ट शेल है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं कर सकता, एक खाली रहता है, तो होल इज जनरेटेड, होल इज जनरेटेड, एक्स्ट्रा होल इज जनरेटेड, जिसके हिसाब से हमारा क्या हुआ, एक चार्ज कैरियर जनरेट हुआ और चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो वो क्या है हमारा, जो हम, वो क्या करेगा, वो उसका जो एल्युमिनियम का एक खाली इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन में टेंडेंसी है और एक कोवैलेंट के लिए वो होल पे जनरेट करता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैरियर जनरेट हुआ है, इसलिए इसको पी टाइप बोलते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या है,
हमारा सिलिकॉन के साथ अल्युमिनियम जब पेयर होता है तो देयर इज ए होल जनरेटेड, सो दैट इज चार्ज कैरियर टू चार्ज कैरियर से चार्ज कैरियर बढ़ गया है, तो वो क्या होगा, दैट इज पी टाइप. सिमिलरली एन टाइप, in n type there are group 5 elements is added to, that is pentavalent element. Pentavalent मतलब it has 5 valence electrons, of 5 valence electrons. When it is added to silicon lattice structure, let's suppose phosphorus is a pentavalent thing, phosphorus which has 15 atomic number and valence electron 5. When it is added to silicon lattice structure, then 4 electrons of phosphorus is shared by lattice. क्या होगा, अगर हमारे इधर देखेंगे, लेट्स सपोज इधर फॉस्फोरस है, तो उसका 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया सिलिकॉन से, देयर इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, an electron is extra in phosphorus which cause an free electron charge carrier. free electron charge carrier वो क्या करेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर क्रिएट करेगा. तो देर इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज, देर इज ए प्रेजेंस ऑफ मोर नेगेटिव चार्ज कैरियर, so it is known as n type doped extrinsic semiconductor. हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप देखे, एक है पी टाइप, एक एन टाइप. पी टाइप में क्या है, इट इज एडेड व्हेन ग्रुप 3 एलिमेंट इज एडेड बाय ग्रुप 4 एलिमेंट्स, that is known as silicon is added with like aluminum is tetravalent, so aluminum has 3 valence electrons, so when it is bonded to हमारा जो silicon, when silicon lattice structures, 3 electrons they share 3 covalent bonds and another covalent bonds require an electron, so there is a vacant place, so it snatches electron from nearby covalent bond and their hole is generated. So the hole is positive charge, so it is known as p type semiconductor, p type extrinsic semiconductor. And when हमारा जो पेंटावेलेंट एटम्स जब ऐड होता है सिलिकॉन में, तब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि पेंटावेलेंट में आप 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज a extra electron, so the after covalent bond there is another extra electron present in like phosphorus, so there phosphorus their electron is extra, so if there is a extra electron, there is a more charge carriers of the extra electron. Due to extra electrons, the charge carrier is negatively charged carrier, there is more extra charge carrier and charge carrier concentration is more, so it is known as n type electron charge carrier. N type pentavalent, p type tetravalent. Due to tetravalent grouping, there is a p type, and due to n type, due to pentavalent group. Here, our whole concentration is more, hole is generated. Here, electron is generated. Here, electron is centered, so group 4 is known as donor. Here, p type, it is electron holes are generated, it is accepting electron, it is known as acceptor. So, it is Na, it is Nd. So, if we see the energy charge character like energy band diagrams, we can see that. That's about this. In here, you can see. Here you can see. This is energy band diagram of हमारा जो सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, it is semiconductor's energy band diagram, and here the energy of
acceptor is there. So it accepts electron from valence band, and there is a whole positive charge generated here because it accepts electrons from valence band. So then in valence band their hole is generated. So this is for p type, and for n type we can see that uh, in n type we see that there is like in n type we can see in energy band diagram here. It is for both in the formulable. This is about formulable. We are not discussed about formulable. Let's see another picture where n type, here n type, I think, yeah, here n type, the energy band you see, here is valence band, here is valence band, here is conduction band, and donor energy level is here. Here there is electrons extra available. So here, from here, electrons jumps to conduction band, and there is a electron extra free electrons. So you can see extra free electrons in conduction band. Here hole is generated in valence band which conducts electricity in p types. Here there is a extra electron in conduction band. So that is known as n type. Here what is added? Phosphorus is added, that is pentavalent atom, group 5. Here aluminum is added, which is group 3, which is tetravalent. Now you have known what is p type semiconductor, what is n type semiconductor. Now हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस वन डायोड. इस लेक्चर में हम पी टाइप और एन टाइप के बारे में डिस्कस किए. पी टाइप क्या होता है, पी टाइप में कैसे होल जनरेट होते हैं, एन टाइप में कैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसे हमारा चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता है, एंड हाउ आवर फॉर्मुलेबल्स आर डिफरेंट. We will discuss another video about formulable क्या है, formulable क्या है, how formulable varies in like semiconductors, and हमारा formulable कैसे इलेक्ट्रॉन होने से कैसे नीचे आता है, कैसे ऊपर जाता है, उसके बारे में और एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करें. Now we will discuss about P. We discuss what is P type, what is N type. Then we will discuss what is PN junction diode. PN junction क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. When there is a one p type element and another n type element is added, then there is a junction created. Then in junction there is different properties, so that the junction is known as PN junction. So what is PN junction? Two types p and n type doped materials added one to another is known as PN junction diode. तो उसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, हाउ पीएन जंक्शन बिहेव्स देयर वी विल डिस्कस. Let's suppose what is PN junction we see. Let's suppose I do not have yes, I may have images. And इधर से नहीं करते images, not this one, not here, next page. हाँ, तो p type and n type when दो atoms क्या करेंगे, p type and n type atoms are added, then an n type material semiconductor is added in metallurgical junction. There is a tendency of like creating like junction, and junction there is different properties, that is known as pn junction diode. pn junction क्या है, p type n type के जंक्शन में जो जंक्शन क्रिएट होता है
पी टाइप एन टाइप। तो उसमें हमारा जंक्शन में जो जंक्शन क्रिएट होता है उसके पीएन जंक्शन बोलते हैं। पी टाइप मेटल क्या है, जिसमें हमारा थोड़ा होल का डायरेक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एंड वी हैव व्हेन होल इज फॉर्म। और एक बार डिस्कस करेंगे लाइक जब हमारा एल्यूमिनियम जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट करेगा तो दूसरे से कौन एटम से इलेक्ट्रॉन लाएगा, नहीं तो टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन देन एल्यूमिनियम इज व्हाट, there is a vacant electron so aluminum is positively charged। वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ला रहा है देन aluminum is positively charged in aluminum is positively charged ion। Here phosphorus is donating electrons so does extra electrons, so phosphorus is negatively charged ion। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करेंगे। तो देयर आर होल्स इन प्रेजेंट इन holes present in p type semiconductor and there are extra electrons present in or n type electron, then it balances out when in p type। जब p type में हमारा होल्स होंगे उसके साथ चार्ज कैरियर होगा तो वो तो क्या करेगा, वो न्यूट्रल कर देगा क्योंकि एल्यूमिनियम आटम उधर होल को नहीं दिया होगा, होल उधर प्रेजेंट ही होगा तो इट इज न्यूट्रल। व्हेन इट गिव्स द होल, होल इज recombines with electron then aluminum has one shortage electron then it is positively charged, negatively charged। जब इधर होल होल में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा तो एल्युमिनियम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो एल्युमिनियम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दैट्स नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज हाउ देयर आयंस एंड Na negatively charged we will discuss here। p type has extra holes and n type has extra electrons। when there is a junction, hole from inside outer edges goes to p type outer edges and electron from outer edges they diffuses and they recombines। होल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बाइन हो जाएंगे। तो उधर इधर से हमारा p टाइप से देयर विल बी होल मूविंग टू इनसाइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड मूव टू एंड रिकॉम्बाइंस देन इट विल फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयंस बिकॉज इधर से क्या होगा, अल्युमिनियम का हमारा होल चला जाएगा तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इट इज नेगेटिवली चार्ज। हियर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट फ्रॉम द phosphorus atoms or their ion characters then that is positively charged ions। here positively charged ion create हुआ, here negatively charged ions create हुआ क्योंकि वो लैटिस फ्यूज में वो मूव नहीं कर सकते आयन्स, जो फॉस्फोरस और एल्युमिनियम एटम्स नहीं मूव कर सकते तो उधर आयन्स क्रिएट हो गए। This is Na negative charge, acceptor negative charge, and donor positive charge. And p type there are holes, and n type there are electrons, extra electrons। तो जब जो रीजन में जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बाइन हुआ उसको हम स्पेस फ्री चार्ज रीजन और डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। डिप्लेशन रीजन और बिकॉज हियर होल इलेक्ट मुझे भी नहीं खाओ जीवन में खाई दी এটা রেকর্ডিং রে যাଉଛି যাও depletion region is created। so depletion region there is no charge carriers are depleted so it is known as depletion region। so there is a negatively charged ion and positively charged ion created। so due to this negative and positive charge ions created there is a electric field from positive to negative here। so their electric field, there is a electric field so that electric field is opposite direction from n to p that is known as dielectric electric field। due to that electric field there is a capacitance also we know that is junction capacitance। we will not discuss that in this video। हम इस वीडियो में जंक्शन कैपेसिटेंस और ट्रांजिस्टर कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ यार नेगेटिव चार्जेस है, देयर पॉजिटिव चार्जेस है और कभी कभी होल्स वगैरह इसमें डिफ्यूज करके कंडक्ट करते हैं। जब हम फॉरवर्ड वाइज और नेगेटिव फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज में बारे में डिस्कस करेंगे तब हम
लाइक जैसे होल कैसे डिफ्यूज करंट, डिफ्यूजन करंट का डेप्थ करंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम अब डिप्लेशन रीजन, उधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसके बारे में बात की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या करेगा, होल्स को इधर साइड को फोर्स करेगा, और हियर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑपोजिट, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन इज दिस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होल्स को डिफ्यूजन डिप्लेशन एरिया वगैरह में आने के लिए नहीं देगा। हम इसमें पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो we will discuss about how PN junction, the and PN junction there is a diode, or this is diode symbol, this is positive side and this is negative side, this is P type and this is N type material, there is a junction. So उसमें what is behavior of forward biasing of PN junction, what is behavior of reverse biasing junction, what is behavior characters of PN junction, इसके बारे में डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। व्हाट इज एनालिटिक डायग्राम, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, व्हाट इज डिप्लेशन रीजन, हाउ डिप्लेशन रीजन्स आर फाउंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन रीजन, उसके बारे में डिस्कस किया। इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट इज डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, and what is symbol of diode, and what is forward biasing of diode and reverse biasing of diode. When forward biasing when we connect p side into p positive terminal and n side on a negative terminal or battery source, then there is a certain barrier potential, then after that it conducts. When it is connected in reverse, matlab p side is connected to the n side of battery and p side is and negative terminal is connected to the positive side of battery, there will be no conduction. After some period there is a breakdown, there is general breakdown and also breakdown. How different breakdowns, how we use that breakdowns and how we use our devices, will discuss in next videos. So हम बाद में वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, पी टाइप एन टाइप के बारे में, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्सिंग बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पी एन जंक्शन के बारे में डिस्कस किए, और उसके बारे में फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, कैसे डिफ्लेक्शन घटता है, कैसे डिप्लेशन बढ़ता है रिवर्स बायस में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ब्रेकडाउन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So in this video we discussed what is PN junction, what is P type and semiconductors. And these P type and N type semiconductors are used to in creating different devices like diode, rectifier, transistors and all. तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑल द डिटेल्स इन नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर ऑडियो में किसी चीज़ होगा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आई हैव रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस माय होम। सो इफ देयर विल बी एनी इश्यूज इन ऑडियोज, प्लीज bear it, use headphones. I am trying to cancel my videos, like cancel my audios. Jai Hind. If you like the video, please like it and share and subscribe. Let's suppose I have to close the recording. Jai Hind.